हेलो दोस्तों, लेट्सट्यूट बिजनेस मास्टरी में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि जीएसटी क्या होता है। We see it on restaurant bills, movie tickets, grocery bills and so on. But when it comes to information and updates regarding GST, we are clueless about where to find it. यहाँ पे 4 मेजर वेबसाइट्स हैं जो आपको जीएसटी जानने में हेल्प करेंगी। तो चलिए इन वेबसाइट्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज www.gst.gov.in। ये वेबसाइट ज्यादातर जीएसटी रिटर्न के लिए यूज की जाती है। होम पेज पे आपको बहुत सारी कीज मिलेंगी एंड उसके बराबर नीचे आपको न्यूज एंड अपडेट सेक्शन मिलेगा। वहां पे आपको पॉपुलर टॉपिक्स भी मिलेंगे, हेल्प डेस्क नंबर होगा, एज वेल एज दी अपकमिंग ड्यू डेट्स जो आप एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपके डेस्क पे आप वो स्टिक कर सकते हैं ताकि आप कोई भी डेट मिस ना करें। तो ये है वो कीज। Click on login for GST login purpose where we can comply our return. Services key is where you can find services like GST registration, payment, refund, status inquiry, etc. GST law key will provide information regarding the law of GST as per each state. Downloads key is for downloading of Excel utility. Search taxpayer key is to search GST number and GST taxpayer's current status. Help and taxpayer facilities key is for support purpose where you can find press releases, grievance, redressal portal, GST media, etc. And e-invoice key will take you to e-invoice website. The moving red mark notification is for most recent updates. Moving on to the second website, which is www.cbic.gov.in. This website is used for GST notification or circular updates. यहाँ पे मेन पेज पे आप GST नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, जैसे कि GST, कस्टम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्सेट्रा। क्लिक ऑन द GST की। यहाँ पे ये ओवरव्यू ऑप्शन आपको GST का ओवरव्यू देगा। फिर आपको एक्ट्स, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, रूल्स यहाँ पे मिलेंगे। आप आपके GST के पास्ट 5 इयर्स की हिस्ट्री भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है FAQs फॉर जनरल FAQs। आपके कोई भी डाउट हो तो आप ये FAQs चेक कर सकते हैं। GST रेट्स और रेडी रेकनर, ये यूज होता है आपको डिफरेंट HSN कोड के GST रेट्स जानने के लिए। GST update for latest update. Manuals, SOPs provide you with the standard operating procedures. And help desk, contact number or online grievance for any sort of help. Third one is www.ewaybill.nic.in. This is used for e-way bill. E-way bill is an electronic way of bill for movement of goods to be generated on the e-way bill portal. एक GST registered person cannot transfer goods in vehicle जिसका वैल्यू 50,000 से ऊपर है विदाउट एनी ई-वे बिल। ऑन द होम पेज यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, एंड न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। योर ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन की इज फॉर GST टैक्स पेयर हु वांट्स टू रजिस्टर ऑन ई-वे बिल पोर्टल। एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर इज फॉर ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन. And e-way bill for citizen is for common people. You can find updates in the home page. And the fourth one is www.einvoice1.gst.in. This is used for e-invoice. And e-invoice ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होता है। ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन सप्लायर एंड बायर एंड वैलिडेटेड बाय द गवर्नमेंट टैक्स पोर्टल। यहाँ पे होम पेज पे आप रजिस्टर कर सकते हैं and login के लिए e-invoice registration. After e-invoice enablement and for e-invoice enablement, click on login for e-way bill login. So that is it for this session. We hope you got a basic idea about GST portal and related websites. If you want to know how to register yourself, then do check out our course available on our website www.letstute.com. For more such videos, subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update from us. Thank you.